अगर मैं इसके क्वेश्चन रीड आउट करूँ जो टेस्ट 2 है PIT 2 के, तो उसमें आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन था द स्कूल टीचर आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन गेटिंग स्टूडेंट्स डिटेल बेस्ड ऑन रोल नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि जो स्कूल टीचर है वो स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंगली उनको डिटेल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, सब 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उनको एक सपोज रोल नंबर 5 नंबर आया या 452 नंबर्स है कोई रोल नंबर, तो उसके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग टू उसको डिटेल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिल्ड ए पाइथन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है फॉर टीचर्स टू रिट्राइव स्टूडेंट्स डिटेल। आपको स्टूडेंट डिटेल रिट्राइव करनी है। कैसी डिटेल होगी? उसके अंदर फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, कौन से क्लास में है वो, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, पेरेंट्स मोबाइल नंबर क्या है और कौन सी सिटी से आ रहा है वो। ठीक है, इतने डेटा ऑलरेडी पहले डेटाबेस में है, हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो फ्रॉम डेटाबेस बाय एंटरिंग स्टूडेंट्स रोल नंबर एज ए इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या देना है? उनको रोल नंबर देना है, और जैसे ही रोल नंबर देंगे इनपुट में, तो आउटपुट में उनको क्या दिखाई देगा कि स्टूडेंट डेटाबेस में जो चीज़ है, ये सब जो मैंने दिया है स्टूडेंट डिटेल, वो उनको आउटपुट में प्रिंट होके आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने हिंट क्या दी है? टेक 2 और 3 सैंपल स्टूडेंट्स डेटा इन डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, आपको 1 या 2 स्टूडेंट्स का डेटा एज ए डिक्शनरी फॉर्म में लेना है। बाकी डेटाबेस में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हम इतने सारे डिटेल एंट्री नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है? 1 से 2, 2 से 3 सैंपल लेना है स्टूडेंट्स के डेटा के, एंड यूज पाइथन फंक्शन करना है। एक पाइथन फंक्शन बनाना है कि जो स्टूडेंट डिटेल रिट्राइव करे विथ रोल नंबर एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है कि यूज पाइथन फंक्शन टू रिट्राइव स्टूडेंट डिटेल विथ रोल नंबर एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आपको एक पाइथन फंक्शन बनाना था, जो पाइथन फंक्शन में आपको इनपुट में रोल नंबर डालना है, तो अकॉर्डिंगली वो आउटपुट में आपको क्या देगा? स्टूडेंट डिटेल्स देगा। राइट, तो ये आपका प्रॉब्लम पहले समझना था कि क्या करना है। तो ऑलरेडी अगर आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैंने हिंट दे दी थी नीचे कि क्योंकि आप अलग डायरेक्शन में सोचोगे कि हाँ कि दूसरा कोई ऑप्शन होगा, लेकिन मैं क्लियर कट उसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट यू नीड टू यूज डिक्शनरी फॉर डेटाबेस क्रिएशन। ठीक है, आपको डेटाबेस जो बनाना है वो डिक्शनरी से डेटाबेस बनाओ। दूसरी चीज, आपको पाइथन फंक्शन यूज करना है फॉर रिट्राइविंग डेटा। अभी अंदर का लॉजिक फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हिंट मैंने दे दिया था। आपको 50% काम जो था सोचने का मैंने खत्म कर दिया हिंट देके। बाकी 50% काम था जो आपको लॉजिक क्रिएट करना था, तो वो आप कर नहीं पाए। 1-2 बच्चे थोड़ा बहुत ट्राई किया है, लेकिन उतना तक नहीं पहुंचे। ठीक है, उन लोगों ने जस्ट, बाकी लोगों ने तो क्या ट्राई किया मेरे को समझ में नहीं आया, क्या मतलब क्या करना चाहा वो मेरे को समझ में नहीं आया, क्या मतलब वो सोचे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो उसके डिक्शनरी, आप मान लो कि आप कोई चीज को डेटाबेस में से रिट्राइव करना है, तो मैंने डेटाबेस किस टाइप का दिया? डिक्शनरी टाइप का दिया है। तो आपको डेटाबेस कहाँ लिखना पड़ेगा? फंक्शन के बाहर के फंक्शन के अंदर। ठीक है, दो मतलब आप ले सकते हो, फंक्शन से बाहर है फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगर फंक्शन से बाहर लोगे तो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो भी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर फंक्शन के अंदर भी लोगे तो भी वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, तो भी आप एज ए उसके डेटा रिट्राइव कर सकते हो। तो अगर बाहर भी डिफाइन करो या अंदर भी डिफाइन करो, वो डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी कैसे डिफाइन करनी है दूसरी बात है। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर डेटा कैसे लिखना है? तो हमको पता है कि एक स्टूडेंट्स के नाम के अंदर और एक स्टूडेंट्स के रोल नंबर के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम जैसे बहुत सारे मतलब 2-3 बच्चों ने ऐसा किया कि डिक्शनरी का नाम ही उनका रोल नंबर दे दिया, लेकिन ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम में है, और आपका जो बात करो कि अगर आप बात करो कि जो नाम लिखना है कोई भी वेरिएबल में, डिक्शनरी इज ए वेरिएबल मतलब, ठीक है, डेटा टाइप से, तो डेटा टाइप्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके अंदर ओनली नंबर्स नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमको पता है, तो आगे कुछ अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, एस अंडरस्कोर करके 1 नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट का नंबर हुआ, तो ऐसे आपको नाम लिखना है कि एस अंडरस्कोर 1 ए आपके डिक्शनरी, एक्स अंडरस्कोर 2 दूसरी डिक्शनरी, एस अंडरस्कोर 3 तीसरी डिक्शनरी, मतलब ऐसे पूरे S1 से लेके जितने भी स्टूडेंट्स है 500 स्टूडेंट, उसका डेटाबेस क्रिएट होगा इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। पर डिक्शनरी के अंदर क्या होगा? डिक्शनरी के अंदर क्या होगा कि ये जितने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, वो आपकी की हो जाएगी, क्योंकि हर एक सबके लिए
एक कॉमन चीज है, फर्स्ट नेम सबके अंदर रहेगा, लास्ट नेम सबके अंदर रहेगा, क्लास रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, पेरेंट्स मोबाइल नंबर रहेगा, सिटी रहेगी, सबके अंदर रहेगा। दिस इज कॉल्ड की। और वैल्यू हर एक स्टूडेंट के हिसाब से चेंज रहेगी। तो एक की आपको मिल गई, स्टूडेंट्स के जो नाम है और रोल नंबर है वो विथ S_1 करके है, ठीक है। तो ये आपने डिक्शनरी तो क्रिएट कर दी, लेकिन आपको डिक्शनरी को कॉल कैसे करना है, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर ऐड किया, कि जैसे 1 नंबर ऐड किया, तो 1 नंबर की डिटेल आपको फैच करनी है, तो आप कैसे फैच करवाओगे, ठीक है। तो आपको कैसे फैच करवाना है कि जैसे आप मान लो कि 1 नंबर एंटर कर रहे हो, तो 1 नंबर एंटर होने के बाद जो 1 नंबर आएगा इट इज इन फॉर्म ऑफ, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि 2-3 नंबर अगर लिखते हैं या सिंगल नंबर भी आप एंटर करते हो, इट इज इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। नंबर डिजिट नंबर मतलब डेसिमल नंबर्स में नहीं आता, वो इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट में आता है। तो एक टेक्स्ट इनपुट में 1 आया हमारा, तो हमको क्या करना है कि 1 के साथ s को क्लब करना है। तो s_ एक स्ट्रिंग है और 1 एक स्ट्रिंग है, दोनों को कंबाइन करना है। और दोनों को कंबाइन कैसे करना है, प्लस सिंबल, सिंपल, ठीक है। एक दूसरी स्ट्रिंग बनेगी s_ और जो हमारे इनपुट आया, सपोज 1 आया, तो s_+1, तो s_1 मतलब टोटल आपको मिला है s_1। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट्स का आईडी हुआ वो, ठीक है, मतलब रोल नंबर से ऊपर उसके आईडी हुआ, जो किसको टारगेट करेगा, वो डिक्शनरी को टारगेट करेगा, वो फर्स्ट नंबर की डिक्शनरी को टारगेट करेगा, ठीक है। तो अभी वो ये सब चीजें किसके अंदर रहेंगी, आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगी। तो अभी फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको इनपुट लेना है, उसके ऊपर आएगा इनपुट लेना है, फिर डिक्शनरी पहले इनपुट लेना है, फिर आपका फंक्शन डेफिनेशन आएगा, ठीक है। फिर आप 1 बाय 1 आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। जैसे कि इफ स्टेटमेंट लगा कि इफ आपका जो इनपुट आया था वो इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू s_1 है, यस, ठीक है, तो आप फर्स्ट डिक्शनरी का आउटपुट दो। जैसे 2 है तो सेकंड डिक्शनरी का आउटपुट दो। अगर आपको ऐसा नहीं करना या फॉर लूप में अंदर पूरा एक चीज को कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको अगर इफ एल्स करने जाओगे तो बहुत सारी इफ एल्स कितने आएंगे, सब 500 स्टूडेंट्स है, 500 स्टूडेंट्स है, तो 500 इफ एल्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर, जो आपको नाम मिला है s_1 नाम का जो डिक्शनरी मिला है, ठीक है, तो वो डिक्शनरी का सीधे आप एक्सेस करो ना। क्या करना है कि आपको नाम चाहिए, तो नाम कैसे रिट्राइव करोगे, x_1 इन ब्रैकेट ऑफ क्या है आपका जो नाम लिखना है, वो सपोज मान लो कि आप फर्स्ट डिक्शनरी है, मतलब उसका स्टूडेंट्स नेम निकालना है, तो आप पता है कि आपको फर्स्ट नेम का जो की है उसका वैल्यू निकालना है। तो आपको हम की से वैल्यू निकाल सकते थे, जो हमने डिक्शनरी में सीखा था। की आपको लिखना है, तो की लिखोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन ब्रैकेट में आपको की लिखना है, तो आपको सब फर्स्ट नेम लिखना है, तो ब्रैकेट में आपको फर्स्ट नेम लिख के तो उसकी वैल्यू आएगी, तो एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, दूसरा आएगा दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सब चीजें जो आई उस अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। वो स्टोर होने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट करना है कि प्रिंट हर एक का वैल्यू जो भी है आपको प्रिंट करना है। तो आप सीधे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट फर्स्ट नेम कॉलन, फिर आपको जो फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल दिया है वो, फिर आपका सेकेंड नेम है जो लास्ट नेम में है तो उसका वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल, मतलब जो भी है वो कॉमा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट या अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट सबका लिख सकते हो, कि जैसे फर्स्ट नेम का प्रिंट स्टेटमेंट, फिर लास्ट नेम का, क्लास का, फिर डेट ऑफ बर्थ, सबका अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप ये सब चीज किसके अंदर हो रही है, आपके फंक्शंस के अंदर हो रही है, फंक्शन डेफिनेशन के। अगर आपको ऐसा नहीं करना कि फंक्शन वो वैल्यू आपको रिटर्न करे और आपके इसके हिसाब से आपको काम करना है, तो आपको पता है कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करना, रिटर्न फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू कॉमा फोर्थ वैल्यू, मतलब आप कॉमा करके जैसे आप वैल्यू लिख रहे हो इतनी सारी वैल्यू आपको रिटर्न में, मतलब आप टोटल आपको फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, क्लास चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पेरेंट्स मोबाइल नंबर एंड सिटी, इस 6 वेरिएबल है आपको रिटर्न करना है फंक्शन से। तो फंक्शन कॉमा रिटर्न में कॉमा करके 6 के 6 वेरिएबल आप लिख दो, और जब फंक्शन के बाहर फिर आप फंक्शन को कॉल करो, तो फिर फंक्शन से कॉल करोगे तो जो आपने इनपुट में लिया वो इसके मतलब फंक्शंस के आर्गुमेंट में डालना है, और जो भी आपको रिटर्न में आ रहा है तो सब फिर से वो सब वेरिएबल का आपको
डिफाइन करने पड़ेंगे, वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, फिर आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट करो। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो आपको ये प्रोग्राम मतलब आप अगर मान लो कि आपने खाली मान लो कि आप डिक्शनरी भी क्रिएट किए तो उसके भी मार्क्स मैंने काउंट किए हैं कि सपोज आपने डिक्शनरी भी एक दो वेरिएबल्स मतलब फर्स्ट नेम या सेकंड नेम लास्ट नेम के लिए भी आपने यूज किया है डिक्शनरी भी, तो भी आप मतलब अकॉर्डिंग टू आपके वो नाम मतलब मार्क्स मिले हुए। ठीक है, आपने सपोज फंक्शन डेफिनेशन भी किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिसने मतलब क्या किया वो समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम में। ठीक है, तो वो लोग जिसने किया हुआ उन लोग को तो पता ही होगा कि क्या क्या किया हुआ है, तो थोड़ा समझ ली इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो आप सबको ये प्रोग्राम करना है। फिर से मैं इसका असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये दो प्रॉब्लम का, और आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेकेंड आप बताओ कि जो प्रॉब्लम था वो तो एकदम इजी था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो सिंपल आपका जो डेट दिया था उसका डे में कन्वर्शन करना है, जो हमने कैलेंडर मॉड्यूल्स की बात की थी। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था भी था उसके अंदर कि आपको डे में कन्वर्जन करना है डेट का, तो इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, तो किसी एक ने ट्राई किया है कैलेंडर के जो मॉड्यूल्स यूज करके, और बहुत एंड तक ट्राई किया हुआ है, लेकिन कुछ सिंटैक्स एरर के कारण वो एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन ट्राई अच्छा था, वो किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कैलेंडर जो है आपका जो डेट एंड टाइम जो मॉड्यूल है एंड कैलेंडर मॉड्यूल है उसको आपको इंपोर्ट करवाना था। वो इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो इनपुट ले रहे हो उसका फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है कि DDMMYYY करके आपको फॉर्मेट में डालना है इस इनपुट में। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में आप इनपुट डालोगे तो आपका जो आउटपुट मतलब जो इनपुट आएगा उसको आप कन्वर्ट कर पाओगे डेट में, सिस्टम डेट में। ठीक है, वो कन्वर्ट होने के बाद फिर अब कैलेंडर मॉड्यूल है वो क्या करेगा, डेट टू डे में कन्वर्शन करेगा, सिंपल उसके फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो डे में कन्वर्जन हो गया, तो अभी आपको चेक करना है इफ इट इज संडे और सैटरडे। ठीक है, देन इट विल प्रिंट दैट इट इज हॉलीडे, और अगर बाकी का है इट इज कॉल्ड वर्किंग डे, तो फिर प्रिंट आपको करना है द डे ऑफ डेट इज मंडे एंड इट इज हॉलीडे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही प्रिंट करना था। तो दूसरा वाला तो एकदम इजी था। इस एक कब आएगा आपको, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी आएगा। ठीक है, आपको भी मतलब मैंने पढ़ाया और आपने बस पढ़ लिया खत्म हो गया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में और भी रहेगा इसके अंदर, एप्लीकेशन बेस्ड में क्वेश्चन पूछूंगा। अभी सिंपल एमसीक्यू तो पूछूंगा ही नहीं, अगली बार भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो आपको जम के प्रिपरेशन करनी है। सर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे देना। हाँ, टाइम मैं दे दूंगा, आप बोलोगे 20 का 40 मिनट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन Yes, आपको ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। क्लियर? और बताओ सर आप फरीदी ले आवा છે સર? ફિનિશ ટેસ્ટ પૂરો। બીજા ટેસ્ટમાં ટ્રાય કરવાનો હોય તમારે। આપણે 4 ટેસ્ટ છે, એક ટેસ્ટ તમારો સારો હશે, આ બીજો વીક ગયો હવે ત્રીજો ટેસ્ટમાં તમારે પ્રિપેરેશન કરવાની છે, નો એક્સ્ટ્રા ટેસ્ટ। ठीक है, तो we'll start with the session what we have left in the last lecture, so about the file management। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीच में भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को बताओ। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को बताओ। जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे मैं खाली बोलता जाऊंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और आपको ये सब्जेक्ट मतलब आप अगर बात कर रहे हो, ये सब्जेक्ट एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप जैसे बाकी सब्जेक्ट का एस्पेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एस्पेक्ट इस तरीके से एंगल से देखोगे तो ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट
लेने का रीजन ही यही है कि आप प्रैक्टिकली इसके साथ जुड़े रहो, ठीक है। अगर बाकी सब्जेक्ट अगर देखोगे तो उसके अंदर थियोरेटिकल एस्पेक्ट बहुत है, जिसके अंदर आपको थियरी पढ़ के ही आपको आंसर्स देने हैं। इसके अंदर भी ऐसा नहीं है, और ऐसा भी मैं कर सकता था कि आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आपको पढ़ाओ और थियोरेटिकल एस्पेक्ट में ही क्वेश्चन पूछूं, बट आप अगर सोचो कि अभी का जो आप बोल सकते हो कि जनरेशन है, अभी नई जनरेशन है कि नया एस्पेक्ट टेक्निकल एस्पेक्ट है, उनको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाना क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आप यूट्यूब पे ही सीख सकते हो, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी सीख सकते हो थियोरेटिकल एस्पेक्ट, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझना है तो खुद ट्राई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, और जब आपको प्रॉब्लम मिलेगी तब उसके सॉल्यूशन से पीछे आप जाओगे, तब जाके आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं ये चीज इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे, और सॉल्यूशन निकालने के टाइम आपको दूसरी चीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तब जाके वो आपको याद रहेगा वो चीज, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोग सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट टेस्ट रहेगा जो फाइल हैंडलिंग के ऊपर रहेगा, फाइल उसके ऊपर, तो उसके अंदर भी आपको यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही रहेंगे इस टाइप के, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा गूगल पे नहीं मिलते, बाकी के सब गूगल पे मिल जाते हैं आपको, लाइव टेस्ट में भी आप गूगलिंग करोगे तो आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक आपको नहीं मिला होगा गूगल में। तो यही चीज है जो आपको कुछ अलग करने के लिए फोर्स करेगी कि नहीं ये चीज आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दोनों क्वेश्चन है, मैं उसका असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद इस दोनों जो है क्वेश्चंस उसका आपको सॉल्यूशंस मेरे को करके बताना है, ठीक है। आपके जो भी इनपुट एंड आउटपुट आ रहा है मेरे को आपको भेजना है, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके वही आपको मैं चेक करूंगा आपका प्रॉब्लम आउटपुट कैसे लिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा देन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोल भाई। हेलो। बोल હા सके। સર, ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે એમાં સર આપણે મેથડ ખબર ડિક્શનરીની આઇટમ ડોટ આઇટમ કરીને हाँ એ યુઝ કરીએगा સર ફોર લૂપમાં કી એન્ડ વેલ્યू ઇન ડિક્સ વાળી કરી શકાય ને। આઇટમ સર કી આઇટમ અને વેલ્યુ બંને પ્રિન્ટ થાય। બંને વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરો તો બી થશે, એમાં શું બધી જ વેલ્યુ થશે, એમાં તમે કી વેલ્યુ હા, સર. કરશો ને આઇટમ્સ, હા બરોબર। સપોઝ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિટ્રાઈવ કરવી છે, સપોઝ ફર્સ્ટ નેમમાં એક વેરિયેબલ લેવો છે, સેકન્ડ નેમ લાસ્ટ નેમનો એક વેરિયેબલ લેવો છે, તો પછી આપણે સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર ખાલી કી જ લખવાની હોય, વેલ્યુ ઓટોમેટિક એમાં આઉટપુટમાં આવશે, ઓકે। તો બધા એક સાથે તમારે લેવું હોય તો બી તમે લઈ શકો, એવરી વેલ્યુ યુ કેન ગેટ, એન્ડ જો તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇટમ્સ ફ્રોમ ડિક્શનરી તમારે લેવી છે, ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ફિફ્થ જે બી આઇટમ્સ, તો તમે કી અલગ અલગ નાખો તમને અલગ અલગ વેલ્યુ, બંને રીતે છે તમારા માટે દરવાજો ઓપન છે, યુ કેન મેક એ પ્રોગ્રામ ઇન હંડ્રેડ્સ વે, 100 રસ્તાઓ છે તમારે પ્રોગ્રામ બનાવવા માટે, બટ તમે કયો રસ્તો અપનાવો છો તમારા ઉપર આધાર। હું મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમને પ્રોગ્રામ કીધો, તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પ્રોગ્રામનો અલગ હોય, યુ કેન મેક ધેટ પ્રોગ્રામ, બટ વોટ આઈ નીડ ઇઝ આઈ નીડ ટુ સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ, ધેટ્સ ઓલ। મેં પહેલા દિવસે બી તમને કહ્યું હતું પ્રોબ્લેમ મીન્સ સોલ્યુશન in different ways, but what exactly they asked to input a roll number, so that facility should be there in program, and the output should print this all these variables, the first name, last name, class, date of birth and city should in the output, that's all। અંદર તમે શું ખીચડી રાંધી છે એનાથી મને કોઈ મતલબ નથી, I need a input, they have to ask and I will put a input as a roll number and it will print a output of this 5 variables 6 variables, that's all। અંદર તમે શું કર્યું છે એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, હું તો સીધો પ્રોગ્રામ નાખીશ ને ઇનપુટ નાખીશ ને આઉટપુટ મળશે તો હું પ્રોગ્રામ જોવાનો બી નથી, ઓકે। બટ ધ પ્રોગ્રામ શુડ બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ, તમને અહીંયા ઇઝી કરવા માટે તમને બે આસ્પેક્ટ આપ્યા હતા કે ડિક્શનરી યુઝ કરો, કેમ, કારણ કે આટલા બધા ડેટા છે કે તમે એક ડેટા લેવા જશો તો તમારે વેરિયેબલ્સ વધી જશે, સો ડિક્શનરી વિલ કીપ ઓલ ધીસ ડેટા ઇન સિંગલ ફોર્મ, એટલે ડિક્શનરી કહે છે। તો આ તમારું ઇઝી ફોર્મેટ છે તમારું પ્રોગ્રામિંગ। બીજું તમને શું કર્યું છે, ફંક્શન્સ કેમ કયા છે,
if you use the function, then it can be used multiple time in somewhere else, and we are focusing on functions and modules. આ તમારો જે ટેસ્ટ છે functions and modules ઉપર હતો. That's why I have told you to use the functions in this program. બરોબર? તો તમે તમારી રીતે ટ્રાય કરજો આ પ્રોગ્રામ. હું તમને અસાઇનમેન્ટ ક્રિએટ કરું છું અને પ્રોબ્લેમ્સ હશે, બધાને પ્રોબ્લેમ હશે તો આપણે એને સોલ્વ કરીશું. ઓકે, ક્લિયર? Okay, so we'll move forward for today's session with file management. File operations we have seen by reading and writing, closing the file. Then the write operations also we have seen this append mode, this write mode, that the X mode. Also we have seen read mode. Okay, so there's a different modes are there for file operations. એના પછી આપણે જોયું હતું છેલ્લે at the last what we have seen this called your file. Just a second, આપણે ક્લાસમાં તમને બતાવી દઉં. Before, okay, I will share the screen. Okay, so what we have seen is called the file handling methods. Okay, so that we have seen in the last session that these are the different methods for file handling. Okay, so we'll see individual method how we are going to use that the methods. Okay, so some methods already we have seen. There is a called close method that we have seen. That we have also seen the write method we have seen. Okay, but once again we'll see read method we have seen. Okay, once again we'll see in every method. So if we'll see that close method, this method closes the file. So if file is open and we want to close the file, just we need to write file dot close. So if you'll see that the called method is the syntax is called file.close. Simple, if the file is open, then we can simply close the files like that. Okay, so this way we can close the file. Then after file closing, it is called detach. So this detach handling methods basically when it is used when you are means what exactly how file is going to be read. So we need to go into detail of file handling or file reading process. Then and only you can understand that detach methods. So how file is going to be read? Already after last time we have talked about that how file is read. File basically is stored in your hard disk. Okay, the hard disk store the files with file extension. Suppose it is called myfiles_txt. This file is stored in hard disk. Now your processor which reading the file, it's connected with your RAM. Okay, so processor will process all the data of this file, or all the process or all the commands will executed will done by the processors. Processor is connected with RAM because file means that data exchange through processor is done by the particular RAM. So the RAM will store the data temporarily, and the data will read by the processor. Also processor write data to the RAM. So all this data read write process by processor is done by the called the RAM. Okay, so while we are open the file, means if you run the code file.open, the file where it is stored initially in the hard drive, now it will move to the called your RAM. But the RAM will not take whole the file. Okay, if it is a 5 MB of file or 10 MB of file, then the RAM capacity is not that much. Suppose you are talking about 1 GB of file is there in your hard disk and your RAM capacity is 4 GB only, or your file is more than that. Okay, and you are handling that file in suppose 512 MB of RAM, then whole file you would go into RAM, then where it will put?
or where the processes will done. Okay, so the whole file won't go to RAM. One by one, some content of the file will go to RAM when processor will ask to read that file. The processor જેમ તમારા content read કરવા માટે command execute કરશે according to your data from the file or hard disk file will move to the RAM, and RAM will put that data, keep that data in the RAM. When it will ask to when processor asks to for that data, then RAM will give data to processor. Okay, now till that time processor will keep that data. This is called buffer. Okay, so this buffer will keep that data for means, suppose buffer means what, it will keep that data in their storage. When it asks processor, then it will give directly to processor. Again, if will data goes to processor, again new data will come to buffer. Okay, so if you heard about that buffering process of YouTube, so what is this buffering process? Buffering, why it is called buffering? Because buffering means what? When some data is streaming from somewhere else, some another computer, and you are watching that video to your computer, so data will come serially. Okay, it is not come in one bunch, but that data એક સાથે નથી આવતા. Or one by one data is coming to your computer and you are watching that video. So if you are watching that video and the call your data process or data serial data speed is high, so you are watching the data, your data is coming, but if you are watching the data at that time, the data is also coming. But if your speed is faster than your watching speed, means then your data will kept in somewhere else into local storage. Okay, so this is called your backup, or it is called buffer. Now if your store, it means your speed is higher, then the buffer will keep more and more data. And if your internet goes after taking all this data, then no buffering is there. So you can see all this from starting to end, you can see all this video, full video. Okay, but if your data connection speed is lower, then if you are watching the video, then buffer will always will empty. Because if you are watching the video, the content what you are watching right now, which content directly to the stream, means directly to the data. So buffer, if you if it will read from buffer, then the video will come. If you read from buffer, so buffer should keep some data, then it will put that data to display. Again, some data will comes to buffer. If some data will there, suppose if there is a size 512 KB or 1 MB of data, if you receive, then and then only it will put that data to display. Till that time, it will take the data slowly and it will kept into buffer. Okay, so that's why it is called buffering process. Same way here, that's why it is called buffer, because if you are reading the file, data goes to RAM, and after RAM, it will goes to processor. Okay, so RAM has a buffer where temporary data will stored. If you want to detach that particular buffer from that processor, okay, if your if your file reading process is finished, or some call garbage value of you are getting in the buffer, you want to detach that buffer and you want to clear all the data of buffer, then this code is being used to this method is used called detach method. Okay, so it separates the row stream from the buffer. So where streaming data is coming from buffer, so it will detach that particular data from that. Okay, so this detach method is called separate underlying row stream from the buffer and return it. After row stream has been detached, buffer is unusable state. So okay, so after data is detached, buffer is not usable. Okay, so that's called detach. Then we are called more file NO, file number. Okay, so what is called file number? Basically, that RAM can access multiple files. Okay, so you can access multiple files in the processor. Okay, in the Python also. So while you are accessing multiple files, which file number will be identified, or will file number is there? Okay, basically we have accessing the file by name. Okay, so suppose
we can also read the two same name files in different locations. Okay, બે અલગ અલગ લોકેશન છે, સેમ નામની ફાઇલ છે તમારી, તો if you will access two files, then how it is possible to get the data of first file or second file? So basically your processor or your program doesn't keep that files with your file name. It will keep some number, or it will give numbers to that your particular file. So that which file number is there we can get it by this called file number. So if you'll see that file number, the Python file number method is to return the descriptor from the file stream as a number, and method raises the exception if operating system does not use a file descriptor. So file and file number. Okay, so if this file, we have opened this file called, the name for file is called python_test.txt read mode. Then if we use this file number, that methods, then it will give the number. Suppose it is called 3. Okay, so it can give any number. It is not that first number, second number. Okay, so according to the processor, according to what file you have accessed in the previous program, according to that your Python will give the descriptor for that particular file number. Okay, it is not fixed. Okay, અત્યારે આ ફાઇલ નંબર 3 બી આવે, પછી પાછું હું પ્રોગ્રામ રન કરું 2 બી આવે, બરોબર, 1 બી આવે, 5 બી આવે. Okay, according to that processor and program previously executed RAM condition, that file descriptor is going to be give the name to that particular file number. Okay, so it is called file number. Then it is called flush. Now what is this flush? Basically what is used for flush? Flush for cleaning something. Okay, that flushing means it will clean something. It will suppose we have we are taking a data to buffer, and buffer is going to give the data to processor if you want to clear the buffer. Okay, so this flush command will clear the buffer. Suppose we are reading the data and some data goes to RAM and it goes to processor. Meantime you want to clear the buffer, then you can clear the buffer. But basically your Python program, while closing the file, તમે જ્યારે file close કરો, you will execute the command .close. At that time automatically it will flush the internal buffer. Okay, so by default it will flush the internal buffer while closing the file. So if you are seeing the flush command, that flush will do the cleaning of your buffer. So if you open the file, this file name, you can get the name of the file by name.extension. Okay, so this is called name, file name is there. Then if you read this file and if you flush that internal buffer, and you can close the file. But if you close the file, automatically the flush command will be executed by default. So flush command is not necessary to execute every time. In between, if you want to clear the buffer, you can use that flush command. Okay, then is atty. Okay, what is this atty? This is called interactive mode. So what is this called interactive mode? Basically, suppose you are using some file, and file is coming in two ways. First from your hard disk. Okay, તમારા hard disk માંથી તમને file મળતી હોય, અથવા the another way is called from some streaming. જે રીતે તમે YouTube નું streaming કર્યો છો, from there also you are getting files. Okay, તમને data મળે છે, so that files is coming to from some another location. So it is not present in actual hardware. અહીંયા નજીકના હાર્ડવેરમાં તમારા કઈ પ્રેઝન્ટ નથી. So if it is present on means near to that file, okay, if it is interactive, then it will show that true, else it will show the false. So if it is interactive mode, interactive means from another way, outside the hardware, so it is called true for that. And if it is not outside, means it is from inside the hardware, it will show true. Okay, it is show false, sorry. તો અહીંયા તમે જોશો કે this file is from hardware, આપણે નજીક હાર્ડ ડિસ્ક ઉપર જ છે ફાઇલ, and if you execute this atty, it will show the false. Okay, so it is not useful to you, just understand the word. Read command, that already we have seen how we are going to read the content of file. Readable means it when it will execute when file is able to read. Okay, if it is to say true and false, when file is about to readable. Okay, if file is readable, then it will show the true. If it is file is not readable, some files are not able to read it. Okay, then it will show the false. Okay, then it is called
file read line. Read line means you need to read the lines one by one. Suppose this file content is something file line 1, line 2, line 3. So if you want to execute, તમારે અત્યારે ક્લાસ છે ને 12:30 કે 1 વાગે ક્લાસ છે તમારે? 1 વાગે છે ને આઈ થિંક. एक वागे सर. Yes sir, एक जी. ઓકે, જસ્ટ 5 મિનિટ આપણે લઈ લઈશું. Yes sir. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે that read lines will execute if we'll file.readline and size. So how many character you want to read from the particular file? Okay, suppose this file contains file 1, file line 2, line 2, line 3, like that. So if you'll read my file's read line, if you execute read line, it will execute first line. After again, if you will execute read lines, it will execute again another lines. After once again, if you will execute read line 8, means from the third line, it will execute first 8 characters. Okay, so it will execute first 8 character. After that, if you will execute read lines, then એ ક્યાંથી એક્ઝિક્યુશન કરવાનું ચાલુ કરશે? જ્યાં તમે you have left, તમે ક્યાંથી લેફ્ટ કર્યું છે each થી તમે you have left reading. If you are left reading after is, then it will read after is. So it will execute this line 3 content. Okay, so આ ખ્યાલ આવી ગયો તમને? read lines બહુ ઘણી વખત બહુ જરૂર પડતી હોય છે read lines. So to execute one by one lines, એક લાઈન તમારે જ્યારે રીડ કરવી હોય, અથવા you need to read the lines by character. પહેલા 5 character જોઈએ છે, so you can execute first 5 character. ફરીથી if you execute second 5 character, ફરીથી read 8 lines 5 કરશો તો બીજા 5 character હશે, ફરીથી બીજા 5 કરશો તો ત્રીજા 5 આવશે. ઓકે, વન બાય વન જ્યાંથી તમે રીડિંગ સ્ટોપ કર્યું છે ત્યાંથી તમે રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકો આની અંદર. ઓકે, પછી રીડ લાઇન્સ છે. આ રીડ લાઇન હતું અને આ રીડ લાઇન્સ છે, એસ છે પાછળ. તો રીડ લાઇન્સ મીન્સ it will read all the lines. Okay, if we execute read lines, then it will execute all the line. તમે જોઈ શકો કે અહીંયા બધી જ લાઈનો તમને આઉટપુટમાં બતાવશે. Okay, so that will execute all the lines. If we execute read lines 10, so it will execute from starting. Okay, આ શું કરશે? સ્ટાર્ટિંગ થી જ એક્ઝિક્યુટ કરશે હંમેશા. So starting ની 10 લાઈનો હશે, it will execute. Sorry, not 10 line, 10 lines. What it will do? 10 means 10 character. 10 character માં તમે જોશો તો પહેલા the એક દિસની વર્ગે THIS means total 4 character, space 5, I 6, S 7, space 8, L 9 and I 10. અહીંયા સુધી તમારું character reading પૂરું થઈ ગયું. But this read lines, what it will do? It will give output the whole line, not a called particular character. It will always give output as a whole line. આખી લાઈન તમને આઉટપુટમાં આવશે, બરાબર? તો અહીંયા 10 character, if it is we have wrote the 10 character, then it will give whole line. Instead of that, if I will give the, suppose it is I સુધી તમારે 10 પૂરા થાય છે, પછી 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So whole line is of character 23. 23 character છે. If I write 25 instead of 23, so if I execute 25, then what it will give the output? 2 lines. Whole 2 lines it will give as output. Okay, તો એવું નથી કે આખી લાઈન ઉપરની આખી લાઈન તો આપશે જ, સેકન્ડની લાઈન અડધી આપશે. નો, it will give whole lines. Okay, તો આ રીલ લાઇન્સનો મતલબ એ છે, it will obviously always give the whole line. જ્યાંથી તમારી ન્યૂ લાઈન સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યાં સુધીની આખી લાઈન તમને જે આઉટપુટમાં આપશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ મીનિંગ ઓફ લાઇન્સ. ઓકે, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. વિલ કન્ટિન્યુ ધ નેક્સ્ટ સેશન. સો ફાસ્ટ કરવામાં તમને કોઈ મજા નહીં આવે, મને બી મજા નહીં આવે. ઓકે, સો અહીંયા આપણો સેશન આજનો એન્ડ કરીએ છીએ. ડાઉટ્સ નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે લઈશું, તમને તમારું મોડું ના થાય નેક્સ્ટ સેશન માટે. ઓકે, સો હેવ અ નાઇસ ડે. ગુડ બાય ટુ ઓલ.